Vaishnavara Madhye Rama Upasakasam. Together, please. Vaishnavara Madhye Rama Upasakasam. Keha Tatvakari Keha Ghoi Tri Vaishnava. Keha Tattvavari Keha Hoye Shri Vaishnava. Vaishnavara Madhye Rama Upasakasam. Keha Tattvavari Keha Hoye Shri Vaishnava. Keha Tattvavari Keha Hoye Shri Vaishnava. Vaishnavara Shri Vaishnava.
Much louder. So let us say the Guru Parampara pranams, please. Nama Om Vishnupadaya, Krishnavastaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Namane, Namaste Saraswati Devi, Gaurvani Pracharane, Nirvishesha Shanyavadi Paschata Vishutarine, Om Agyanati Mirandasya Jnananjana Shataka, Chakshuramritam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. Shri Chaitanya Manobhisham Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapatitamam Shri Guru Vaishnavanshara Shri Rupam Sarvajatam Saganaratam Vidam Sajivam Sarvaitam Sarvadutam Parijana Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Hey Krishna Karuna Sindhu Dinanago Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Namaste Kapta Kanchana Gaurante Shri Vrindavaneshwari Vishnavanusute Devi Pranamami Haripriye Atachantam Kritasya Kripasindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. So we'll give some context to today's verse before we get started. तो शुरू करने से पहले हम थोड़ी भूमिका बताएंगे. Text number 7 and 8. As previously stated, all the residents of the villages visited by the Lord Chaitanya became Vaishnavas and began to chant Hari and Krishna. 7वें और 8वें प्यार का अनुवाद इस प्रकार है. जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान चैतन्य महाप्रभु जिन जिन गांवों में गए वहां के सारे निवासी वैष्णव बन गए और हरि तथा कृष्ण का नाम उच्चारण करने लगे. In this way, in all the villages visited by the Lord, everyone became a Vaishnava, a devotee. इस तरह महाप्रभु जितने सारे गांवों में गए उनका हर व्यक्ति वैष्णव भक्त बन गया. Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Gaur Hari Bol
In South India, there were many types of people. प्यार संख्या 9 अनुवाद। दक्षिण भारत में अनेक प्रकार के लोग थे। Some were philosophical speculators. कुछ तो ज्ञानी थे, Some were fruitive workers. और कुछ सकाम कर्मी। But in any case, there were innumerable non-devotees. किंतु अभक्तों की संख्या अपार थी। So the word innumerable means you can't count how many. तो अपार शब्द का अर्थ है कि आप उसकी गणना नहीं कर सकते। So they were all considered, Krishna's Kaviraj Goswami is considering them all to be non-devotees because they are not yet in contact with the Navaras. तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन बहुत सारे लोगों को अभक्तों की श्रेणी में रख रहे हैं क्योंकि वो अभी तक नाम रस के संपर्क में नहीं आए हैं। The holy name of Krishna, Radha and Krishna in the form of Hare Krishna Maha Mantra, they have not yet had the contact, so practically speaking they dried up. तो क्योंकि वे श्री राधा कृष्ण के नाम स्वरूप हरि नाम के संपर्क में नहीं आए हैं तो वे शुष्क हो गए, सूख गए हैं। This is why this is called the Hare Krishna movement. It is everything. Nama Ras is everything. तो इसीलिए इस आंदोलन को हरे कृष्ण आंदोलन कहा जाता है क्योंकि इसमें नाम रस है और यह परिपूर्ण है। Of course, this is a very relishable subject matter, but today there's a very, very long purport. Just see how this preaching mission is conquering the hearts of everyone in all directions. 530 years ago, there is no separation of time. तो यहाँ समय का कोई भी भेद नहीं है। जो 530 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु जो विजय प्राप्त कर रहे थे वही आज भी हो रही है। जिस प्रकार चाइना से भी भक्त आए हुए हैं तो वहां पर भी आज भी ये प्रचार आंदोलन हरे कृष्ण आंदोलन फैल रहा है और विजय प्राप्त कर रहा है। It's the same Mahaprabhu, it's the same Maha Mantra. और ये वही श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव है, वही महामंत्र का प्रभाव है। The only difference is that the Gaura Shakti is, present tense, invested in Srila Prabhupada and his followers. That is the only difference. Otherwise, same. सिर्फ फर्क यह है कि जो गौर शक्ति है वो श्रील प्रभुपाद में आवेशित है और यही फर्क है, बाकी सेम है, बाकी सब समान है। So now we move on to the 11th verse translation. At the time, all the South Indian Vaishnavas were worshippers of Lord Ramachandra. तो अब पिछले प्यार में महाराज ने जो बताया था कि वही चैतन्य महाप्रभु की गौर शक्ति प्रभुपाद में और उनके अनुयायियों में समावेशित है। और अब 11वें प्यार का अनुवाद। Some were Tattvavadis
and some were followers of Ramanujacharya. अनुवाद इस प्रकार है, उस समय दक्षिण भारत के सारे वैष्णव भगवान रामचंद्र के उपासक थे। उनमें से कुछ तत्ववादी थे और कुछ रामानुजाचार्य के अनुयायी थे। So now this is a really important purport. So I hope everybody will be alert. We'll try to break it up so everybody doesn't, snooze. But because this purport is really heavy purport, strong, very full of very important information. तो यह जो तात्पर्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सशक्त है, तो कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। So Srila Prabhupada says that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur points out that the word Tattvavadi refers to the followers of Srila Madhvacharya. तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संकेत किया है कि तत्ववादी का अर्थ है श्रील मध्वाचार्य के अनुयायी। To distinguish his disciplic succession from the Mayavadi followers of Shankaracharya, Srila Madhvacharya named his party the Tattvavadis. मध्वाचार्य ने अपनी गुरु शिष्य परंपरा को शंकराचार्य के मायावादी अनुयायियों से पृथक करने के लिए अपने दल का नाम तत्ववादी रखा। Impersonal monists are always attacked by these Tattvavadis who attempt to defeat their philosophy of impersonalism. निर्विशेष अद्वैतवादियों पर ये तत्ववादी सदैव आक्रमण करते हैं और उनके निर्विशेष दर्शन को पराजित करने की चेष्टा करते हैं। So Srila Prabhupada is talking about the followers of Madhvacharya here. Tattvavadis means followers of Madhvacharya. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर मध्वाचार्य के अनुयायियों का उल्लेख कर रहे हैं कि तत्ववादी वे हैं जो मध्वाचार्य के अनुयायी हैं। So in those days they were also preaching. तो उन दिनों में अर्थात महाप्रभु जी के समय में उस वक्त भी यह प्रचार था, तत्ववादियों का प्रचार। Trying very hard to confront and defeat the Mayavadis. तो वे मायावादियों को पराजित करने के लिए यह प्रचार कर रहे थे। Generally they established the Supreme Personality of Godhead. सामान्यतः ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्रेष्ठता जताते हैं। Actually, the disciplic succession of Madhvacharya is known as the Brahma Vaishnava sect. किंतु मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वास्तव में ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय के नाम से जानी जाती है। That is the sect coming down from Lord Brahma. अर्थात यह संप्रदाय ब्रह्मा जी से लेकर चला आ रहा है। So we are associated also with Madhvacharya. तो हम भी मध्वाचार्य जी से जुड़े हुए हैं। Because the name of our sampradaya is Brahma Madhava Gauriya Vaishnav Sampradaya. क्योंकि हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। So although Madhvacharya established his own sampradaya, but at the same time actually he is considered part of our sampradaya. Otherwise, why the name Brahma Madhava Vaishnav Sampradaya? That's our line. So we are also connected with Madhvacharya. मध्वाचार्य जी ने अपने संप्रदाय को स्थापित किया ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय, और हम भी उसी से जुड़े हुए हैं। In Udupi, the headquarters of the current followers of Madhvacharya, some they can accept, and some actually don't accept us because we are somewhat different from them. So they have some trouble accepting our lines sometimes, that we have such a, you could say, intimate connection with Madhvacharya. Sometimes they have trouble because we are different. तो ब्रह्म वैष्णव संप्रदाय, मध्वाचार्य जी का जो संप्रदाय है उसका मुख्यालय उडुपी में है। तो उनमें से कुछ लोग तो हमारे संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, किंतु कुछ स्वीकार नहीं करते हैं। Many years ago I was in Udupi, which is the headquarters for Madhvacharya. कुछ वर्षों पूर्व मैं उडुपी में था, जो कि मध्व संप्रदाय का मुख्यालय है। And I was with Jayapataka Swami and 150 devotees around the world in the famous safari party. और जो सफारी पार्टी निकलती है उसमें मैं जयपताका स्वामी जी महाराज और 150 अन्य विदेशी भक्तों के साथ में था। And this was, of course, long before Jayapataka Maharaj's stroke.
तो यह जयपताका स्वामी जी महाराज को जो स्ट्रोक हुआ उससे बहुत पहले की बात है। And he was giving a lecture in a pavilion, and so the local people who were all Vaishnavas, they, came, obviously maybe, not a huge crowd, but 100, 150 or so, maybe about 100 came to hear his lecture. और वहाँ पंडाल में उन्होंने यह प्रवचन दिया और उसमें वहीं के जो लोकल लोग थे, वहीं के स्थानीय लोग, करीब 100-150 लोग वे भी उपस्थित थे। But in the course of the lecture, I was absolutely dismayed to see that the audience was getting up and walking out. Gradually, a chunk of the audience gets smaller and smaller. I was absolutely dismayed. I couldn't believe it. I'd never seen anybody walk out on Jayapataka Swami before, never. But here I watched personally as these people were gradually getting up and leaving his lecture. I was absolutely dismayed. मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि जयपताका स्वामी जी महाराज के प्रवचन में से श्रोतागण उठ करके जाने लगे, लेकिन वहाँ मैं बहुत चकित हुआ जब मैंने देखा कि कुछ श्रोतागण उठ करके जा रहे थे। The conspicuous reason is because in their hearts they can't actually accept that our mission and their mission is the same. In their hearts they can't accept it. Otherwise, how would they dare walk out on a saintly, charismatic acharya who's speaking only Harikatha? How would they dare to walk out unless in their hearts they just couldn't accept that our mission is the same as theirs? तो क्योंकि वे एक अद्भुत आचार्य जयपताका स्वामी जी महाराज के प्रवचन को सुनते हुए जा रहे थे वहां से उठ करके, तो इससे मुझे यह महसूस हुआ कि उनमें से कुछ लोग हमारे संप्रदाय को और उनके संप्रदाय को समान नहीं मानते हैं। So, because the Madhvacharya followers, they identify, you could say, heavily with Lord Brahma. Because here Prabhupada said that the sect is coming down from Lord Brahma. तो जो तत्ववादी हैं, मध्वाचार्य जी के जो अनुयायी हैं, वे ब्रह्मा जी को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मानते हैं, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि यह संप्रदाय ब्रह्मा जी से चलकर आ रहा है। So the next point made by Srila Prabhupada is very significant. If you're taking notes, write it down. तो अब जो प्रभुपाद अगला जो वाक्य कह रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो कृपया इसे लिखें। So because the followers of Madhvacharya, they are strongly identifying with Lord Brahma, Prabhupada next says that the Tattvavadis, they do not accept the incident of Lord Brahma's illusion. तो क्योंकि मध्वाचार्य जी के संप्रदाय तत्ववादी जो हैं, वे ब्रह्मा जी से अपने आप को बहुत आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसलिए अगला जो वाक्य है वह लिख रहे हैं प्रभुपाद कि फलस्वरूप मध्वाचार्य के अनुयायी तत्ववादी ब्रह्मा के मोह की उस घटना को स्वीकार नहीं करते, which is recorded in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आई है। So we see that this is a seed of a problem, because they can't understand Brahma Mahotsa Leela. They cannot understand how Lord Brahma become an illusion. So this is incomplete knowledge. With all respects, it's incomplete knowledge, because we know from Srimad Bhagavatam, Krishna book even, that Lord Brahma became bewildered. How? That's a long story. Yogamaya, not just Mahamaya like us, but Yogamaya, and very complicated actually, because some pride mixed in, etc. But fundamentally under Yoga Maya. तो यहाँ पर हम एक समस्या का बीज देखते हैं कि ये तत्ववादी ब्रह्म विमोहन लीला को स्वीकार नहीं करते, जिसका कि उदाहरण श्रीमद् भागवतम में हुआ है। और यह मैं पूर्ण आदर के साथ कहता हूँ कि यह उनकी एक अपूर्ण ज्ञान है। और write this down also, because you're learning new things. तो इसे भी आप लिखें, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। Next, Srila Prabhupada points out that Srila Madhvacharya has purposely avoided commenting on that portion of Srimad Bhagavatam in which Brahma Mohana, the illusion of Lord Brahma, is mentioned. See, this is very heavy actually, very heavy. That he's, you could say, editing this out of the Srimad Bhagavatam. That's very
serious, actually. I mean, of course, he's, huge acharya, predecessor. What we see here, we have to see the distinction between that sampradaya and ours. Here's the major point that Prabhupada is making. तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। श्रील मध्वाचार्य ने श्रीमद् भागवतम के उस अंश की जानबूझकर टीका नहीं की जिसमें ब्रह्म विमोहन अर्थात ब्रह्मा के मोहित होने का उल्लेख हुआ है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि इस विषय पर मध्वाचार्य जी ने उल्लेख नहीं किया है। Srila Madhavendra Puri was one of the acharyas in that Tattvavada disciplic succession, and he established the ultimate goal of transcendentalism to be attainment of pure devotional service, love of God. So our Madhavendra Puri, he is coming from that line. So here we see how the two lines are coming together through Madhavacharya but especially joined together by Madhavendra Puri, who is like one of the most significant acharyas in the history of our sampradaya. आगे प्रभुपाद बताते हैं, श्रील माधवेंद्र पुरी तत्ववादी गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों में से एक थे। उन्होंने शुद्ध भक्ति की प्राप्ति को ही आध्यात्मवाद का चरम लक्ष्य बतलाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्रील माधवेंद्र पुरी जी वह एक बिंदु है जहाँ पर दोनों परंपराएं आकर के जुड़ती हैं। Because you could say that Madhavendra Puri was the hero of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the ultimate hero, the worshipable hero. I mean, big time, big time hero, super special more than any other acharya. Madhavendra Puri had a profound influence on Chaitanya Mahaprabhu. तो चैतन्य महाप्रभु पर श्रील माधवेंद्र पुरी पाद जी का बहुत ही गहरा असर था और अन्य सभी आचार्यों में वे उनके सबसे पूजनीय आचार्य हैं। So, in fact, Advaitacharya, we see another link here because Advaitacharya is a disciple of Madhavendra Puri. So we see how there's a weld, so to speak, like welding iron, between the Madhava Sampradaya and the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. So the evidence is very strong, and we see that with these links, the evidence is very strong that there is a connection between these two sampradayas. It should not be denied, actually. और अद्वैत आचार्य जी भी श्रील माधवेंद्र पुरी पाद के शिष्य हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अद्वैत आचार्य और श्रील माधवेंद्र पुरी पाद, इनसे हमें पता लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है हमारे पास कि किस प्रकार ये दोनों परंपराएं अर्थात ब्रह्म मध्व संप्रदाय और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय आपस में जुड़े हुए हैं और इसे नकारा नहीं जा सकता है। Srila Prabhupada continues, those Vaishnavas belonging to the Gaudiya Sampradaya, the disciplic succession following Sri Chaitanya Mahaprabhu, are distinct from the Tattvavadis, although they belong to the same Tattvavada Sampradaya. In other words, here we have another, amazing manifestation of Achinta Veda Tattva, that we are one with that Sampradaya, but there are distinctions also. आगे प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा अर्थात गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव यद्यपि उसी तत्ववाद संप्रदाय से संबंधित हैं, किंतु फिर भी वे तत्ववादियों से पृथक हैं। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि किस प्रकार यहाँ संप्रदाय में भी अचिंत्य भेदाभेद तत्व पाया जाता है। In fact, there's an important section of the Chaitanya Charitamrita where Mahaprabhu is personally having a debate with Tattvavadis. तो श्री चैतन्य चरितामृत में एक ऐसा भी उदाहरण आता है कि जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु तत्ववादियों से वाद विवाद करते हैं। Do you recall the section? Would be Madhya Lila, I suppose. I don't recall the section. Madhya Lila. तो मध्य लीला में यह उदाहरण आता है। So Mahaprabhu is having a philosophical discussion with the Tattvavadis
and they had some differences with him. और उस उल्लेख में यह वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत के आधार पर उनसे वाद विवाद करते हैं, और उसमें वहां पता लगता है कि किस प्रकार कुछ असमानताएं भी हैं। But Mahaprabhu defeated them as far as their arguments. Mahaprabhu defeated them. महाप्रभु ने उनके उन आर्गुमेंट्स को वहां पर पराजित किया। So, the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu are therefore known as the Madhava Gaudiya Sampradaya. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी मध्व गौड़ीय संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। So here Prabhupada is confirming what I've just described, that we are one with that sampradaya, but there are differences also, you see. यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार हम मध्व संप्रदाय से एक भी हैं और उनसे अलग भी हैं। Prabhupada continues, the word Pashandi refers to those who are opposed to pure devotional service. प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताते हैं, पाषंडी शब्द शुद्ध भक्ति के विरोधियों का सूचक है। In particular, these are the Mayavadis, the impersonalists. विशेषतया ये मायावादी अर्थात निर्विशेषवादी हैं। A definition of Pashandi is given in the Hari Bhakti Vilas 173. हरि भक्ति विलास 1.73 में पाषंडी की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है। So the word Pashandi is used to mean offender. तो पाषंडी शब्द का प्रयोग यहाँ अपराधी के लिए हुआ है। The Mayavadis are offenders against Lord Shri Krishna because they can't accept that the Supreme Absolute Truth has personality, and they criticize him. और मायावादी अपराधी इसलिए हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप को नहीं स्वीकार करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। So please repeat after me. This is the quote from Hari Bhakti Vilas. और मेरे पीछे दोहराइएगा, यह हरि भक्ति विलास से उद्धृत श्लोक है। Yastu Narayanam. यस्तु नारायणं। Jiv Jago, I know, I see, looking out here and I see a lot of sleepy devotees, but New Year's Eve is over, Prabhus. Let's try it again. Yastu Narayanam. यस्तु नारायणं। Brahma Rudari Daivatai. ब्रह्म रुद्रादि दैवतये। Samadvenaiva Viksheta. समत्वेनैव विक्षेता। Sapasandi. स पाषंडी। Bhavet Dhruvam. भवेत् ध्रुवान्। A Pashandi a Pashandi is one who thinks that the Supreme Lord Narayan, the persona of Godhead, is on the same level with demigods headed by Lord Brahma and Lord Shiva. पाषंडी वह है जो सोचता है कि भगवान नारायण तथा ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवता एक ही पद पर स्थित हैं। And devotee never considers Lord Narayan to be the same platform with Lord Brahma and Lord Shiva. लेकिन भक्त जन कभी भी भगवान नारायण को ब्रह्मा जी तथा शिव जी के पद पर नहीं मानते। Next, Srila Prabhupada moves on to a different point. अब श्रील प्रभुपाद एक दूसरे बिंदु पर जाते हैं। The Madhvacharya Sampradayas and Ramanuja Sampradayas are mainly worshippers of Lord Ramachandra, although the Sri Vaishnavas are supposed to be worshippers of Lord Narayan. मध्वाचार्य संप्रदाय तथा रामानुज संप्रदाय मुख्य रूप से भगवान रामचंद्र के उपासक हैं। यद्यपि यह माना जाता है कि श्री वैष्णव लोग भगवान नारायण तथा लक्ष्मी के उपासक हैं। They are also worshipping Lakshmi, and the Tattvadis are supposed to be worshippers of Lord Krishna. तथा तत्ववादी भगवान कृष्ण के उपासक हैं। So here we see there's a built-in problem here. तो यहाँ पर Because हम they're not putting the proper emphasis Krishna to Bhagavan Swayam.
तो यहाँ पर हम एक समस्या देखते हैं कि वह इस बात पर बल नहीं देते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। So Prabhupada is stating that these Madhava Sampradaya, they are mostly worshipping Lord, mainly worshipping Lord Ramachandra. यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि मध्वाचार्य संप्रदाय तथा रामानुज संप्रदाय मुख्य रूप से भगवान रामचंद्र के उपासक हैं। At present, in most of the monasteries belonging to the Madhava Sampradaya, Lord Ramachandra is worshipped. आजकल मध्व संप्रदाय के अधिकांश मठों में भगवान रामचंद्र की पूजा की जाती है। That's ironic because, as far as I know, Ramanujacharya himself was worshipping Lakshman Narayan primarily. तो जहाँ तक मुझे पता है, श्री रामानुजाचार्य वे स्वयं भी श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। They're called the Sri Vaishnavas, means they are worshipping the goddess of fortune. इसीलिए उन्हें श्री वैष्णव कहा जाता है क्योंकि वे भाग्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। In fact, that Sampradaya is descending from the goddess of fortune. She is one of the origins of Sampradaya. और उनके संप्रदाय का जो स्रोत है वे भी लक्ष्मी जी ही हैं। Prabhupada continues, in the book known as Adhyatma Ramayana, there are statements in chapter 12 to 15 about worshipping the deities of Sri Ramachandra and Sita. आगे प्रभुपाद बताते हैं, आध्यात्म रामायण नामक पुस्तक के 12वें से 15वें अध्यायों में श्री रामचंद्र तथा सीता जी के अर्चा विग्रहों की पूजा किए जाने का उल्लेख है। There it is stated that during Lord Ramachandra's time, there was a Brahmana who took a vow to fast until he saw Lord Ramachandra. उसमें एक कथन है कि भगवान रामचंद्र के काल में एक ब्राह्मण था जिसने यह व्रत ले रखा था कि भगवान रामचंद्र का दर्शन किए बिना वह प्रातःकालीन भोजन नहीं करेगा। Sometimes due to business, Lord Ramachandra was absent from his capital for a full week and could not be seen by the citizens during that time. कभी-कभी कार्यवश भगवान रामचंद्र राजधानी से पूरे सप्ताह बाहर रहते थे, अतः उस अवधि में नागरिकों को उनका दर्शन नहीं मिल पाता था। Because of his vow, the Brahmana could not take even a drop of water during the week. फलतः इस ब्राह्मण ने अपने व्रत के कारण उस सप्ताह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। Later, after 8 or 9 days, when the Brahmana could see Lord Ramachandra personally, he would break his fast. 8-9 दिन के बाद जब उसने साक्षात भगवान रामचंद्र के दर्शन किए, तब उसने अपना उपवास तोड़ा। Upon observing the Brahmana's rigid means very strong, unbendable, unbreakable. On observing his rigid vow, Lord Sri Ramachandra ordered his younger brother Lakshman to deliver a pair of Sitaram deities to the Brahmana. उस ब्राह्मण के दृढ़ व्रत को देखकर भगवान श्री रामचंद्र ने अपने भाई लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे उस ब्राह्मण को सीताराम के अर्चा विग्रह की एक जोड़ी दे दें। The Brahmana received the deities from Sri Lakshmanji and worshipped them faithfully as long as he lived. उस ब्राह्मण ने लक्ष्मण जी से वे अर्चा विग्रह प्राप्त किए और आजीवन उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करता रहा। At the time of his death, he delivered the deities to Sri Hanumanji, who for many years hung them around his neck and served them with all devotion. उसके मृत्यु के समय वह इन अर्चा विग्रहों को हनुमान जी को देता गया, जिन्हें वे वर्षों तक अपने गले में लटकाकर भक्ति सहित उनकी सेवा करते रहे। It reminds me that in 1969 it became a fashion that the devotees would have a little pouch
that they would around the neck, and then they would carry a deity of Jagannath around their neck. तो 1969 के समय की एक बात मुझे याद आती है कि उस समय यह फैशन हो गया था कि भक्त अपने गले में एक झोली लटका लेते थे और उसमें भगवान जगन्नाथ के विग्रह रखते थे. My friend Bhaktisiddhanta Swami, he has got shalagram shilas. तो मेरे मित्र हैं भक्ति सिद्धांत स्वामी जी महाराज, तो वे शालिग्राम शिला रखते थे. So he's usually wearing a shalagram around his neck and hidden under his chadar. तो वे भक्ति सिद्धांत महाराज शालिग्राम शिला को अपने गले में लटका कर रखते थे और वह चादर से ढकी होती थी. So when I see him, I always go up and I pat his chest to see what shalagram he has got. तो मैं उनके उस चादर को उनके छाती पर से हटा करके देखता था कि कौन सी शालिग्राम शिला वे This is साथ में a रखे हैं. very ancient tradition. और ये बहुत ही पुराना एक रिवाज है. So at the time of his death, this Brahmana delivered the deities to Sri Hanumanji, who for many years hung them around his neck and served them with all devotion. उस ब्राह्मण के मृत्यु के समय वह इन अर्चा विग्रहों को हनुमान जी को देता गया, जिन्हें वे वर्षों तक अपने गले में लटकाकर भक्ति सहित उनकी सेवा करते रहे. After many years, when Hanumanji departed on the hill known as Ganda Madana, he delivered the deities to Bhimashena, one of the Pandavas, and Bhimashena brought these to his palace, where he kept them very carefully. किंतु अनेक वर्षों बाद जब हनुमान जी गंधमादन पर्वत चले गए, तो वे अर्चा विग्रहों को पांडवों में से एक भीमसेन को देते गए. भीमसेन उन्हें अपने महल में ले आए और उन्हें वहां उन्होंने बहुत सावधानी से रखा. The last king of the Pandavas, Shimakanta, worshipped the deities in that palace. अंतिम पांडव राजा क्षेमकांत ने उसी महल में उनकी पूजा की. Later, the same deities were kept in the custody. Custody means caretaking or ownership of the kings of Orissa, known as Gajapatis. बाद में ये अर्चा विग्रह उड़ीसा के राजा गजपतियों की निगरानी में चले गए. One of the acharyas, known as Narahari Tirtha, who was in the disciplic succession of Madhavacharya, received these deities from the king of Orissa. नरहरि तीर्थ नामक एक आचार्य ने, जो मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में थे, उड़ीसा के राजा से इन विग्रहों को प्राप्त किया. It may be noted that these particular deities of Ram and Sita have been worshipped from the time of King Ikshaku. ध्यान देने की बात है कि राम तथा सीता के ये विशेष अर्चा विग्रह राजा इक्ष्वाकु के समय से ही पूजे जाते रहे हैं. So this means they're very, very ancient. Ikshaku is one of the descendants of the sun god, right? इक्ष्वाकु जो हैं वे सूर्य देवता के एक वंशज हैं. He's mentioned by Krishna in the Bhagavad Gita. और इनका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में किया अपने पिता राजा मनु से. So Prabhupada comments that indeed they were worshipped by the royal princes even before the appearance of Lord Ramachandra. निसंदेह इनकी पूजा भगवान रामचंद्र के आविर्भाव के पहले से राजकुमारों द्वारा होती रही होगी. Later, during Lord Ramachandra's presence, the deities were worshipped by Lakshman. बाद में भगवान रामचंद्र के काल में इनकी पूजा लक्ष्मण ने की. It is said that just 3 months before his disappearance, Sri Madhavacharya received these deities and installed them in the Udupi temple. कहा जाता है कि श्री माधवाचार्य ने अपने तिरोधान के 3 मास पूर्व इन अर्चा विग्रहों को प्राप्त किया था और इनकी स्थापना उडुपी मंदिर में कर दी थी. So this is very nectarian history of India. I mean, it's beyond India. This is all transcendental. तो यह एक दिव्य इतिहास है जो कि बहुत ही अमृतमय है.
It took place in the land of Bharatvarsha. This is the point. और विशेष बिंदु यह है कि यह इतिहास भारतवर्ष में घटित हुआ। So these kind of pastimes of deities and pastimes of Vaishnava saints, this is what makes the entire Bharatvarsha a sacred place, not just Vrindavan. If somebody thinks that only Vrindavan and Mayapur, Jagannath Puri, if somebody thinks that those are the only sacred places, that is Kanista. तो यह एक महत्वपूर्ण इतिहास है कि भारतवर्ष वह जगह है जहाँ पे ऐसी दिव्य लीलाएं, अर्चा विग्रहों की दिव्य लीलाएं, भगवान के भक्तों की दिव्य लीलाएं हुई हैं। और कोई अगर ऐसा मानता है कि सिर्फ मायापुर, जगन्नाथपुरी या वृंदावन ही वह दिव्य लीला के स्थान है, तो यह एक कनिष्ठ समझ है। But at the same time, that's not to minimize these most sacred places. We worship these sacred places, and we see from our yatra alone how so many devotees are going there, as often as they can to that physical place called Vrindavan. So, not to minimize the importance or extra special qualities of these tirtha places. तो हम यहाँ पर इन तीर्थ स्थानों अर्थात मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, इनकी स्थिति को नीचे नहीं ला रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। But at the same time, we should understand, because of these great Vaishnavas alone, the entire Bharatvarsha is sacred. We need to know that. But of course, it's a matter of degree. We're not going to say that Delhi is exactly the same as Vrindavan, that is, 3.5 hour drive. We're going to say it's not exactly the same, but again, you can't say that Delhi is 100% mundane either. Can you? लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि इन तीर्थ स्थानों के अतिरिक्त अन्य जो तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर वैष्णवों ने, संतों ने लीलाएं की हैं, वे भी बहुत पवित्र हैं। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि दिल्ली और वृंदावन दोनों पूर्ण रूप से 100% समान है आध्यात्मिक शक्ति में, उनमें कुछ डिफरेंस भी है। Can you say, Prabhu? Can you say that the city of Delhi is 100% mundane? No? I already tipped you off. महाराज पूछ रहे हैं क्या आप कह सकते हैं, लेकिन कि क्या दिल्ली 100% एक भौतिक जगह है? All right, Rupa Sanatan. How come Delhi cannot be considered a 100% mundane city when you see all the buses, and all air pollution and so many millions of people and so many shops and everything? It certainly appears to be mundane. So then how come we can dare to say that the city of Delhi is not 100% mundane? Why do we dare say that? Well, let him translate. महाराज रूप सनातन प्रभु से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप किस तरह कह सकते हैं कि दिल्ली, जहाँ की इतना वायु प्रदूषण है, इतनी दुकानें हैं, ऐसे लोग हैं, फिर भी आप कैसे कह सकते हैं कि यह 100% एक भौतिक जगह, भौतिक स्थान नहीं है जिसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है? What's your answer? Loud, please. Because Srila Prabhupada was here? That's your answer? All right, our temples are Vaikuntha. So that means that that Delhi was 100% mundane until Iskcon came. Is that correct? Does that sound right to you? तो रूप सनातन प्रभु ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज, ये पूर्ण रूपेण एक भौतिक जगह नहीं है दिल्ली। जैसा कि प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे मंदिर जो हैं वे वैकुंठ हैं। तो महाराज ने पूछा कि You're a Muni. You changed your mind. महाराज ने उत्तर दिया, तो क्या इसका मतलब यह है कि इस्कॉन के दिल्ली में आने से पहले यह 100% रूप से एक भौतिक स्थान था, कोई आध्यात्मिक शक्ति के बिना? All right, Prabhu. Was Delhi 100% mundane until Iskcon came? Yes or no? Translate. महाराज ने दया सिंधु श्रीवास प्रभु से पूछा कि क्या इसका अर्थ यह है कि इस्कॉन के दिल्ली में आने से पहले
यह दिल्ली शहर एक पूर्ण रूपेण भौतिक जगह थी? No. Yes. You know, Indians answer questions like this, you know. I didn't get whether that was a yes or a no. I think it was slippery. महाराज समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हाँ कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। Before Iskcon came, was Delhi 100% mundane, yes or no? No. No? What? No? All right, that's fine. Then why wasn't it 100% mundane before Iskcon got here? Why? तो महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि नहीं, इस्कॉन के आने से पहले यह 100% रूप से भौतिक जगह नहीं थी, तो ऐसा क्यों है? Okay, that's the first point. The river Jamuna flows there. Hare wow! प्रभु जी ने बहुत सही जवाब दिया कि यमुना इस स्थान पर बहती है, तो इसलिए बहुत ही पवित्र स्थान है। What else? The Pandavas stayed here. Hare wow! पांडवों ने यहाँ पर राज्य किया। What else? और क्या है? और कुछ बताइए। Yes. Krishna personally came here. Hare wow! भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर आए थे। Yes. Yes. Bhagwan also on the banks of the Ganga. Is it not? Huh? Yes, no? That correct or not correct? Huh? In the process, in the area, in the, is it, huh? This is what Hastinapur. So what is the distinction between Hastinapur and Hastinapur? The few hours from Delhi, 2 hours from Delhi, 2.5 hours. 2 hours from Delhi. All right. So then it was not, yes, it's not. But still, Balaram also came here. भगवान बलराम भी यहाँ पर आए थे। And people say that the Red Fort is the remains of the Pandavas fort. I don't know if that's 100% और accurate, but that's what people say. कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो लाल किला है वह पांडवों का ही पुराना किला था। So point is that and many saints and sages have also come here, you know. और हम देखते हैं कि कितने सारे संत भी यहाँ पर आए हैं। So because of the Pandavas, विशेषतया पांडवों का यह निवास स्थान था। so actually there's a lot more to this purport, but since we are running short on time, unless you want to hear a little more, the next reading we should continue with this purport because you're going to see, I told you in advance that this is a loaded purport with many important points made by Srila Prabhupada. और समय सीमा होने की वजह से हालांकि यह तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं से भरा हुआ है, तो हम आगे भी इसे जारी रखेंगे। Any questions, comments, corrections, any more corrections? किन्हीं के कोई प्रश्न, सुझाव, टिप्पणी? Jagat Guru Sirupal ki jai, Grantara Shrimad Chaitanya Charitamrita ki jai, Gopakanande, Hari Hari Bolo. परम पूजनीय भक्ति माधुर्य गोविंद गोस्वामी महाराज की जय।